اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد नाज़रीन अज मुंहिंजे साम्हूं जे ख़िदमत आहे डॉक्टर अमीर लाखा जी क़ौम जी माटे he is joining me today inshallah topic जे आहे असांजी डिवोर्स मथे तो आउं पास कनो सी डॉक्टर अमीर लाखा के इनजी ओरखान करे अने टॉपिक जो इंट्रोडक्शन भी करे तो ओवर टू यू डॉक्टर लाखा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पहले मुझे आसाते ही गाल समझाइनी है कि ही जे सब्जेक्ट डिवोर्स जो है तलाक जो कई रीते आके आऊं समझाइण वारो है पहला आके समझाइंदोस कि ही डिवोर्स क्या हिसाबे थे तो यो समझाइंदोस कि ही डिवोर्स पामे तलाकू न थे इंजा कोई रस्ता है त्रीजो आके समझाइंदोस कि जडे तलाक थई भी ने तडे तलाक थयेली बाई जी तलाक थयेली मारो जी हालत केरी थे थी ये आके समझाइंदोस साथे साथे आके समझाइंदोस कि ई समझो कि तलाक थई वई न छुटके कोई छुटको न हो ने तलाक थई वई तो इनके पा केरी ते मदद कईंदासी ई बद्धो साथे है आपको बद्धो प्रॉपर सिस्टमैटिक ये प्रॉपर प्रोग्राम अब्बास भाई बनाया है इंजी चोनथी ई प्रमाणे भाई गोठव्या है अने ही खास जेपा तलाक जी गाल कुले कयो ता हेवर इंजो कारण ये है कि हेवर माशरे में तलाकू वधी वई है खाली पर कौम में ना पांजी पोते जी कौम में बहुत तलाकू वधी वई है एरो ना है कि निंदा निंदा यंगस्टर्स में थे थी ये जे वड्डा बुढ़ा में थे थी 50 वर्ष विया थे लिया इनी जे तलाकू थे थी एरो ना कि निंदा निंदा घर में थे थी वड्डा वड्डा घर वाले में थे थी तो की खामी आए की प्रॉब्लम आए तो आने ही इन ची सको कि खाली है ने ये वो पेंडेमिक आए तो बदे के पैसे जी कड़काई आए पैसा ना आए એટલે झगड़ा वधी विया है अथवा तो ही आखो टाइम घर में विठा है तो हाने आखो टाइम પછી घर में विठो है तो झगड़ा करे ना खाली એકલો नहीं ઘણું બધું आहे એ બધો આખો પ્રોગ્રામ જે ગોઠવાનો आहे આગે સમજાઈંદાસી આઈ સમજો ને બીએ કે સમજાઈ જા કે ફાયદો થીંદો કારણ કે ઘણી વખત નીંદી નીંદી ગાલીઓ में તલાક થઈ નથી વાત में की माल न वे निंदी गाल में ई विचार न करे तो पाई ने वड्डा विचार करजे कि जो ई पा थोड़ो सहन करी गिंजे घुटड़ा उतारी गिंजे तो पांजो जे घर है ई जन्नत थई विंदो पर ही पा निंदी निंदी गाल में बस झगड़े में चढ़ी विंजे ते पोते जो वट देखाड़जे इनमें ने कम बिगड़ी वेंदो तो हने आऊं आके जे 40 पॉइंट्स जे बनायो है वो ई आके आऊं आस्ते आस्ते बदो समझाइंदोस बदो डिटेल में नहीं ना ताकि मुझे कब कब तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पण थे थैंक यू डॉक्टर साहब अने आऊं जे स्क्रीन में आई ये आऊं शेयर करो आहे आंजी बुक जे आई लिखा है हां अने हेवर जे आई डिवोर्स असांजी कम्युनिटी में जेते आए हेवर असांखे समझाया कि निजी निजी ॻाल्हियूं में you know in different ages as well you know जवान में खाली ना है पण बूढ़पन में पण आए you know people who've been married for you know 20 વર્ષ 30 વર્ષ માટે એ લોકા जी शादी लग्न થઈ વ્યા વેન ઇનજી પછી પણ એ લોકા ડિવોર્સ जी you know सिचुएशन में अची वञनि था અને ही जे बुक लिखा आयो पहला आई एक्सप्लेन करो कि आंजो ड्राइविंग फैक्टर करो हो कि ये बुक में आई what was the driving motivation behind you कि जॾहिं आई कोई पण author करे कोई book he must have something behind his mind you know that's basically driving that
authoring that book. So if you can just provide us with that description first. ને પછી પાસ આ book જે અંદર વેનાસી કે 40 જે relationship problems આઈન ને પછી next session में इंशाल्लाह असां cover कईंदासीं કે how do we prevent them जेते आई असांखे सम्झाया इंशाल्लाह ई जे sessions आहिनि असांजा there's part of a series of 4 sessions inshallah that will try and cover this topic. तो आज ये सवाल जवाब ये है कि आऊं हकरे व्हाट्सएप ग्रुप में वोस कि जिनमें पांजो कम वो बदे के थोड़ो आश्वासन दींजो जिनके तकलीफ वे कोई जात जी कोई जो गुजरी वियो वे कोई जो तलाक थे वे कोई के व्यापार में मार आवे वे कोई पण जात जो दुख हुए तो इन माटे पा ये ग्रुप में वासी तो इन्हीं के पा दिलासो दीजिए आश्वासन दीजिए सपोर्ट दीजिए इन माटे वासी तॾहिं हुनारियोस कि जे बायु जिनजी तलाकू थे वे इनी इतलो बेचैनी हुई इनी के इतलो दुख हो इनी इतली बधी गुस्से मेरी के मूंखे थियो के इनी के बહુ મોટા પ્રોબ્લેમ આए પછી આસ્તે આસ્તે ગાલ્યું कर दे समझ पई कि हिनी जे तलाक थे है इनी जे वंग गोते था ई माड़ो में गोते था तॾहिं आउं विचार करे सम्झियोस विचार करे सम्झियोस कि ही अहिड़ो तो न होई सघे कि वंग हकरे जो हुए ताड़ी हकरे हथे न पड़े बई हथे ताड़ी पाड़नी खपे तो जरूर बई जो थोड़ो थोड़ो कीक ने कीक तो वंग हूंदो बस ही કરીને मुंहिंजा मगज में ही विचार अचले मंडिया બધા. Thank you, Dr. Saib. पीछे बात कही रहा कि आई जे ग्रुप में हुआ मुझे याद है कि आई 2009 में जब रिटायर थे आई एज अ जीपी आई एक चैरिटी फॉर्म कही रहा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स and hever I BT charity be form कही रहा है to support divorcees widows as well. इंशाल्लाह इन जो असां डिस्कशन करना सी later. पर मेन जे डिस्कशन क्वेश्चन पूछा करनो हो कि आई बायो जी बात कही रहा आर यू सपोर्टिंग मेन एज वेल कारण कि हेवर यू नो सिचुएशन एरो पण आहे कि मारू पण दुखी थई सकन था कारण कि इट्स नॉट यू नो आई जिते फरमाया कि जे तारी आहे ॿ हथ थी पाणी खपे हकरे हथ थी न पाड़ी सके कोई तो यू नो आर यू प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर मानस माटे पण आई करना है सपोर्ट पंहिंजो सपोर्ट आहे बधे माटे बायु जिनजी तलाक थे हुए ने माड़ू जिनजी तलाक थे हुए ने बायु जे विधवा थे हुए ने माड़ू जे विधुर थे हुए बधे माटे पंहिंजी नज़र में माड़ू ने बायड़ी बधा पा इंसान तरीके लिखो था ने कोई रीजन रिस्ट्रिक्टेड आहे का आई हेवर फोकस करो था स्पेसिफिक रीजन्स में हेवर विचार કર્યા બાદ એ લગ્યો કે ખાલી પા હેવર અમેરિકા યુકે ને કેનેડા જો વધારે કોન્સન્ટ્રેટ કરજે હેવર પછી અગ્યા વધે વધારતા છે ને આજી ટીમ आहे સાથે આજી ચેરિટી જે સાથે હા ટીમ आहे Okay, so inshallah we will cover ये पासा cover करना सी next session में probably the 4th session के पा discuss करना सी के support करो available है तो let us go to your book और share करो है screen में 40 relationship problems and how to prevent them. So should we go to that, Dr. Lakha? I book लिखा है in loving memory of Irfan Jafar and Shamim Huda. ये लोग का जो थोड़ा काई background दी ना कि हाँ ये जे ग्रुप जे फॉर्म थियो जिन जी आऊं गाल कर दोस कि जिनमें जिनके पण जे जात जो दुख हुए ये गिनिया जे ये ग्रुप फॉर्म करण में इरफान जाफर जी मदर
અને શમીમ હુદા जो छोकिरो इनी खास भाग गिन्यावा ये ग्रुप फॉर्म करण में तॾहिं जॾहिं बुक इनमें थी निकिरे ही जॾहिं बुक कहिड़ी रीते लिखणी કે जॾहिं ग्रुप में हुआ બધા તો બધે કે હું થોડો થોડો લીખીને ॾींदो हुउसि 40 પ્રોબ્લેમ્સ हुआ हिकिड़ो प्रोब्लम પહેલા लिखा પછી બધે કે छा કે आइ मूंखे इन जो जवाब ॾियो પછી થોડી વાર વાતનારા આકરા ॿ પછી ના બે જવાબ અચે ન અચે પછી મુંहिंजो જવાબ लिखा જે હેવર ई बुक में जे आहे लिखियलो ई मुंहिंजो जवाब आहे तो ई मुंहिंजो जवाब लिखी इनी खे ॾिया इनी वांचे એ રીતે 40 પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા અકરે પછી અકરી ને 40 પ્રોબ્લેમ जा જવાબ આઉં ॾींदो हुयुसि ई આખી बुक बनी वई तो जॾहिं बुक बनी वई तो पाण चयासीं कि मरहूम इरफान जाफर अने मरहूम शमीम हुदा जा नाम मथे पाण ही बुक पाण डेडिकेट करजे कारण के इनी जी रूह जा सवाब अर्थे पाण ही बुक हाजिर करी आयो मरे वटे ही बरकत थी इनी जी बरकत थी इनमें बहुत घणो बधो सारो कम थींदो इंशाअल्लाह ई बुक जी आई लिखा है इज इट अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज काने के आई मूंखे मोकिलाया एज अ पीडीएफ अगर कोई के खपनो ई बुक इज इट ऑन Amazon या अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज हाउ डू दे एक्सेस दिस ही बुक फ्री ऑफ चार्ज है मुफ्त है ई के है पीडीएफ हलाया के कंप्यूटर में अची वञे એટલે આ ક્લિક કરો એટલે આ આખી બુક વાંચી શકો કમ્પ્યુટર में फोन में आईपैड में જે પણ આખી રીતે વાંચવે એમાં કોઈ પૈસો ચાર્જ નતો થયો Okay, thank you uncle. So why don't we start our session? मुझे माफ कर जा के आउं कच्छी ने इंग्लिश वापरनो है काने के different type of audience असांजा हुना आउं गुजराती वधारे बात नहीं करा काने के आई बीजो सेशन करी गिन्या गुजराती में ने इंशाल्लाह आउं लिंक शेयर करनो in the comments box कि अगर कोई के गुजराती में सांभरनो હોય तो ई सांभरी सके કે આ હિદાયત ટીવી સાથે કઈ રવા હેવર જે આ અસાંજી લાઈફ છે અસાં નારુંતા it's very fast paced you know જે આફ્રિકા में જે વડા થયા हुआ જે માઇગ્રેટ થઈ વિયા towards the west you know especially જવાન છોકરા હોય ને એ લોકો ઈડા વેસ્ટ में અચી વિનંતા નારંતા કે life is very different and again once someone gets married as well what you realize is that the family structure you know doesn't exist sometimes because if you relocate to another city and you're living on your own as well you know once you are married your life becomes very independent and he independence je milno hai bataye ke you know after they get married or after they relocate you know does cause some sort of problems as well through marital issues and that. So Anji experience me, I'll pass the floor to you now. कि I 40 relationship जे problems आए जे I document कर रहा है. Let's go through those and then start talking about each and every one of them, if that's okay for you. Okay. तो आऊं मुके लगे तो हकर problem ने साथ साथे solution दींदो विना तो interesting थी तो खाली वांची इन दोस्तों ने इतनी मजा आए छे. Okay. तो आऊं शुरू करा तो ये नंबर 1 प्रॉब्लम आए कि जे वेस्टर्न कंट्रीज में जे अब्बास भाई चई विया कि वेस्टर्न कंट्रीज में जे आए बदा वसिया है जे ईस्ट अफ्रीका थी आया इंडिया पाकिस्तान जिदा थी आया इनी जे रीते रहता थोड़ा घणा पोते जा जूना विचार गिनीने आव्या है अने हिडा इंग्लैंड में बायु पण काम करे थी मारुए काम करे था भाई बायु तो एडा बहु भणी ने बहु अग्या वधी होय ने कमाई थी घणो बधो ने पोते जे मगज में एटली बधी ताकत पण है अने जो ही कमाईंदी वे एटलो बधो ने मारुए कमाईंदो है घरे सांजो अचे बई थकेल आवे तो अगाऊ जो जे रीते विचार हो ई प्रमाणे बायु बधो घर जो काम करे बधो साफ सुथरी बायु करे बच्चे जो ध्यान ये रखे रंधन जो ही करे तो ही के रीते थई सके ई की में ई की इंसानियत है ई कोई सच्चो ई न्याय है ई अन्याय है એટલે હને જૂના વિચાર વાળા માળું કે વિચાર કરનો ખપે કે હને પાંજી રીત વિચાર કરણ जी बदलाई गई खपे
अने हिनी विचार करण जी बदलाए विचार करण जी रीत बदलाए तो इंजा माइतर के इंजी भेनू के भाई चोंदा कि तू तो बायलो है तू करो ये घर जो काम कहीं तो ये तो भाई जो काम है तू गांडियो है ई न समझ ई सुनू न खपे कारण के आके आजी जिंदगी हलाई जे इनी जी जिंदगी नहीं इनी तो आ चोंदा बदो छे आके पोते जो नारायण जो है आगे खबर है कि ही जे निकाह थे था यानी रसूल्ला जी सुन्नत है कुरान में थी આવ્યો है ने ही अक्रो सैंक्टिटी वाली चीज है इनमें सेक्रेट एस्पेक्ट है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जरो नहीं कि अजय साथे काले व्यासी ही ना ही आए अक्रो साथ जे आए ये आखो परमानेंट साथ है आखी जिंदगी जो साथ है अने हिन जो ई प्रॉब्लम आहे कल्चर प्रॉब्लम आहे कने के आई हिस्ट्री में पण नारो असांजा इमाम जे आहिनि स्पेशली एग्जाम्पल मिले थो असांखे हिस्ट्री में कि इमाम अली ने बीबी फातिमा जे जॾहिं शादी थी लोका जा लगन थिया तॾहिं पाण खे हदीस में पण मिले थो कि इमाम अली आहिनि you know, who wheat be grind karna wa, he used to help out in the house. You know, मूंखे लॻे थो जंहिं चया आहिनि ही कल्चर प्रॉब्लम आहे काने कि अफ्रीका में असांजी पासे मेड्स हुआ you know, कमु करण वारा हुआ अने हेॾा वेस्ट में जे असां लाइफ जे असां पसार करे रहिया आहियूं especially is very fast paced जेते आई फरमाया हेवर you know, and we need to make sure that as a couple you know, we are living together side by side in harmony. तो मूंखे खाली एड करनो अने ॿियो हिकिड़ो आहे कि जे पण ज़रूरियात वे घर जी इनमें ॿई के साथ ॾींदो आहे कारण कि ॿई जो घर आहे ॿई आखिरी साइड ऑफ द फेंस में आहे साम सामे न आहे ॿिए ॿ साथे आहे मतलब कि अॼु कम में ज़रूर आहे थोड़ो घर में साफ़ सुथरी करण में कि कपड़ा धोण में तो माण्हू खे ज़रूर मदद करणो खपे धारो के कोक फेरे अहिड़ो आहे कि पैसे जी बहु ज़रूर अची वई पैसा न आहे मकान घर में तो बायू वटि पैसा आवे तो बायू पता जा पैसा कढे એટલે એરો વખત એરો અચી વિયો आहे કે જે પણ પાંજી પોતે जी સગવડ पंहिंजे पोते जी ख़ुशी पंहिंजे घर खे पाण जन्नत कहिड़ी रीते बनाए सघिजे रीते कोशिश करणी खपे okay ॿियो आहे कि ई पण नथो खपे कि बायू आहे ये अहिड़ी वे कि औरत की न वे हिकिड़ी हिकिड़ी ॻाल्हि में बसि पूछा करे हिकिड़ी हिकिड़ी ॻाल्हि में इनखे खपे कि બધા इनखे जो पोता जा वखाण करे अहिड़ी बायूं सारो न आहे हुते खे थोरो एजुकेट करणो खपे हुते खे थोरो सिखणो खपे हुनर खपे એટલે પોતે કે અગિયાર વધારણો ખપે બીજું ત્રીજો પોઈન્ટ आहे કે કોઈ इंसान એને ભણેલા નહીં કે શીખેલા નહીં જॾहिं જન્મ્યા બધા શીખે था आस्ते आस्ते कोई के कोई जो मगज में कुरो ॻाल्हि आहे ये कोई के समझ नथी पए तो आए हिकिड़े ॿिए सां बोलो सम्झायो कुरो मूंखे तकलीफ़ आहे कुरो मूंखे गमे थो कुरो मूंखे नथो गमे इहा ज़रूरी आहे ऐं चयो तॾहिं ख़बर पए इनथी चोन थी कुरो थिए कि इनथी हुजे हिकिड़े ॿिए जी मोहबत ने प्यार आहे ने ई वधंदो वञे हिकिड़े ॿिए थी उहो जो भरोसो आहे ई वधंदो वञे ने हिकिड़े ॿिए खे सम्झण जी कोशिश करण में मदद थिए पई हिकिड़े ॿिए खे हिन जॾहिं भूल થઈ वञे तो माफ़ पण करे ॾिने तो ही जे आहे ॿोलण जो आहे हिकिड़े ॿिए सां ॻाल्हियूं करण जो आहे ई બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ आहे પછી બીજો फोर्थ पॉइंट आहे कि विहाकरण थियो हिकिड़ो आहे कि ॿ ॼणा छोकिरो ने छोकिरी ॿ भेरा थिए था ने हकड़ा बने था अने ही मगज में पहले थी विझी छॾणो खपे कि ही जे हकड़ा थिए था ही अल्लाह जो हुकम थी थिए था ही रसूल जी सुन्नत प्रमाणे थिए था इनजा બધા કાયદા કાનૂન आहे કોડ ઓફ મેરિડ લાઈફ आहे इनजा બધા જે રીત રિવાજ ને બધું आहे એ બધું અંદર पंहिंजे इस्लाम में आहे जॾहिं ही मगज में उतरंदो
तो हर एक हकरी हकरी गालियों में आई अल्लाह जो विचार करता कि अल्लाह में खुशी है, हम ही करा तो ये बोला तो ये बोलाती ये अल्लाह खुशी है, आई हमेशा ये विचार करता पाके ही थी तो कि नहीं विया तो थई विया ही निकाय ये ना आई समझो ये जे विया थिया है ये बहुत वड्डी गाल है ये है ने कि जे अल्लाह के रसूल के जो खुशी ये बहुत बुद्धि हुई ये विया करनो ये आप डिटेल में न तो विना के कुले खुशी हुई और इनमें बरकत जे है विया में बहुत जबरदस्त बरकत है એટલે ઈ આઈ સમજો હા સચ્ચી વાત કહી રહ્યા કે જ્યારે પણ નિકાહ જડે પરાઈને में अचे કે मौलाना जी नहीं हमेशा आखिरी हदीस पढ़न था कि Allah will bless you and increase your sustenance as well, and it is a true fact from experience as well, you know, and जेके आई पूछा करो आके चोना के you know I regret not getting married earlier sometimes, you know, and sometimes मारू भी चोना है कि आई for example आंजवा example गिना you know you've been married for a very very long time, you know, and the grandchildren be thai hai and alhamdulillah I asanji sathe share karna hai anji experience, and you know the feedback you get as well is that you know people are life partners and you know you've been married for a very very long time as if it's been forever, you know, so that's the benefits of marriage. અને અબ્બાસ ભાઈ હકરો પ્રોબ્લેમ હેડા કરો ઉભો થે કે બ જણા જે વ્યા થયા એમાંથી હકરો આઈધર ઈ માડું અથવા તો બાયરી ઈ દીન ધર્મ જે में મંદી નવે અથવા મંદો નવે ઈ એને મંદી નવે કે ઈ વ્યા સેક્રેડ આય એડા પ્રોબ્લેમ આય અને हिन में के रीते सॉर्ट आउट करनो ई अग्या जडे विंदे अग्या पाने बोलदा तडे अद्दासी पर ही जडे ई हकरे जन में ही खामी वे तो प्रॉब्लम अची ने तो अच्छा पांचवो पॉइंट बदा जडे विया करे तो वो खुशी खुशी वे फाइन फाइन कपड़ा फाइन फाइन गालियो मीठी मीठी गालियो ने हकरे बे ओळखण में ने जादे जात जाओ अनुभव थे ने बदो मजा आ जाए ई करदे अकड़ो कदेरो आचे कि हने हकरे बेती टेवाया અને રિસર્ચ છે તો કે 2 વાર 6 મહિના ને 5 દી પછી 2 જણા જે પૈણ્યા હોય એ હકરે બે સાથે ટેવાઈ વેઠા એટલે એવું જે હનીમૂન જો પીરિયડ જે કોઈ એ 2 વાર 6 મહિના ને 5 દી પછી પૂરો થઈ ગયો અને હકરે બે કે બરાબર ટેવાઈ ગયા હકરે બે जी રીતુ સમજી ગયા અને એવું જે નોવેલ્ટી वो જે નવો નવો એ બધું ઓછો થઈ ગયા ત્યાં કેરાવે તા કે બાય વે ઇનકે ખપે પહેલા जी નવો નવો કેરી ઇનકે મજા દી ને કેરી ઇનકે બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ ચીજો મિલતી हुई ને માન મિલતો એ રોજ મિલતો રહે અથવા મારું એ ઇનકે પહેલે જે રોજ બધી સગવડ ને બધી મજા મિલતી રહે અને એવું ન થઈ શકે ખુલે કે વિચું વેરી બચ્ચા અચી વ્યા ई 2 वर 6 महीने में तो वरी बच्चा अची विया अथवा तो वरी ये लोग कमे लगी विया अथवा घर मकान निकरी गया तो मकान जा मॉर्गेज भरण ई बधी मथा खुटी वे अने ई नोवेल्टी जो को आए ई न रे अने हकरा ब एक बे साथे जूना થઈ વ્યા ને हकरे बे साथे संबंध ई स्टाइल जो होनो कबे तो इंशाल्लाह असां नेक्स्ट सेशन में ई कवर करनासीं कि हाउ डू यू then manage these problems, inshallah solutions je aayi next session mein asa cover karna si hever asa cover karna si problems that lead to divorce. अच्छा बियो प्रॉब्लम है कि जदे गालियो करे ने तो જરાક હસમુખો મોં રખીને જરાક ખીલી ખીલીને ગાલ કરે એને જડે કે હેરો સારો કરે તો થેન્ક યુ ચઈ દે અથવા એ શબ્દ તો પ્લીઝ ચઈ દે એમે કે પૈસા નતા પે એટલો બધો ફેર પવીને તો કે એની લાગણી વધીને
प्यार मोहब्बत वधी ने ने बियो है कि जे अकरे बे के ई खिली ने गालियों करे अथवा तो जोक्स मारे ह्यूमरस रे तो इनमें मोहब्बत वधी ने अकरे बे के वधारे घूरे नहीं तो ही જરાક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ है. अच्छा बियो पॉइंट है कि हने हेवर इतनी बड़ी दौड़ा दौड़ी है कम धंधे में दौड़ा दौड़ी घर में कम घर में अचे तो कम करनो खपे रधन जो साफ सुथरी बच्चे जो बोलो तो हने मारू के ने बाड़ी के इनी ब जने जो टाइम इनी के न तो मिले ने रात जो सुमल लेवी ने तो साफ थकी आवे तो हने क्रू है कि ही जमाने में इनी ब के मारू के ने बाड़ी के टाइम दीनो खपे कि अठवाडिये में 2 થી 3 કલાક तो इनी पोते 2 જણા खाली 2 જણા बच्चा वगैरह के बिया बड़ा कोई वगैरह पोते पोता जो टाइम ई साथे स्पेंड करे अने इनमें स्पेंड करने जो टाइम में फायदो ये है कि हु जुको रसूला चाहिए है नहीं साहब के चोंदा कि ईशा पछी आ विनो आजी बायु साथे विनो ने स्त्री संग करो स्त्री संग એટલે કે સેક્સ કરો क्योंकि कि ही सेक्स करन थी मगज में शांति घणी अचे थी साथे साथे ही सेक्स करन थी वो जो फिजिकल बॉन्ड ने साइकोलॉजिकल बॉन्ड हकरो बने तो माड़ू ने बायडी जो साथे साथे निंदर सारी अची वञे थी साथे साथे डिप्रेशन जा चांसेस ओछा थिए था ने बायु में ही चमड़ी सॉफ्ट थे थी इनजा वार सुहाड़ा थे था इनके स्फूर्ता अची वञे थी इनमें ताकत घणी वधी अचे थी डिप्रेशन न थे ने ई बधा सारा सारा फायदा है ही बधो आऊं डिटेल में नतो विना तो मोटे रिसर्च एविडेंस है कि कुरो के रीते थे तो ई आऊं बधो समझाई सका एटलो बधो है ही खास जरूर है कि ई टाइम आई कढो ने वीक में 2 વખત हकरे साथे आई 2 જણા आई साथे रियो ने जितलो થઈ શકે સેક્સ કરો તો ઇનથી ફાયદો है ने माण्हू के पोते के पण सेल्फ कॉन्फिडेंस वधी वञे पोते के स्फूर्ताई वधी वञे पोते के वो प्रोस्टेट जा कैंसर थी जा चांसेस ओछा थी वञे એટલે ही બધું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ है जेवर ही कम धंधे में ने दौड़ा दौड़ी जे फास्ट लाइफ में भुलाई वियो है तो ही न करनो खपे ही बहुत जरूरी है ही બધો पांजे इस्लाम में બધો आए नहीं चाहिए कि ही करो खास के खास आजा सेहत माटे सारो है तो ही जे है ही मुझे चोनो बहुत इम्पोर्टेंट है इनमें ते ध्यान दीनो कबदो ने की के रीते करनो ई आके गोठवनो कबदो इनमें जो ही खपे तो माँ बाप जेवे ई बच्चे के साचवे तो बायरी ने मारू विने बारे खेल ले फिरल ले अथवा वीकेंड माटे हॉलिडे माटे विने एरो बधो ई सगवड करनी कभी कारण के पाके ही कौम के साथे रखनो काले बराबर है तलाक न थे बराबर है कारण के પછી फ्रेगमेंटेशन થઈ વિને તો સોસાયટી में जॾहिं तलाक थिए and you know I know के પછી प्रॉब्लम भी शुरू थी ना है सोसाइटी जे अंदर ये जे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जे एवर बयान करा about sex. I mean, is it restricted to any particular age? You know, because it's very much driven from an early stage. But later on in life as well, Anji, research pramane, does it cover older age as well? And however, though medication be tablets be malni hai, you know, for potency, etc. So, from your medical experience, what can you share, Asanja viewers, Martin? एक्चुअली सेक्स जो एरो है कि બધો શરીર જુદી જાત જો કોક મારો કે બહુ જ શોખ હોય એ ચીજ જો કોક બાયુ કે બહુ શોખ હોય કોક મારો કે શોખ ન હોય કોક બાયુ કે શોખ ન હોય ई इंजा कारण कुरा ई आम एवर न तो विना डिटेल बियो के
लगभग बाई के जडे मेंस्ट्रुएशन में तो ये लोग का के पसंद न वे सेक्स मेंस्ट्रुएशन जा वीक पहला इनी जो मूड बराबर ना वे भी है जो तो ई ना गमे साथ साथ जडे मेनोपॉज अच्छे 45 वर्ष की उम्र है कि 50 वर्ष की उम्र है बाई जी जडे है हाइज बंद थीन वारो है तो तडे इनके ये मूड ओछो थे ने बाई बाई के मूड वधी वेने અને એરા બધા કારણ કોઈ કે બીમારી વે તો ઇનકે મૂડ ન વે એ સેક્સ કરણ જો અને માણું में 55-60 સુધી લગભગ 60 વર્ષ પછી ઘણા માણું કે જે પોતે જો કરું છે ઓર્ગન પીનિસ ઉભો ન થે એ પ્રોબ્લેમ થાય તો ઇમ્પોર્ટન્સ છે અને ये जो प्रॉब्लम थे तो घना कारण पण है ने घनी दवा पण है पर बेस्ट दवा है कि जे हर्बल होए ये सारी कारण के बई जे दवा है वायग्रा ने एरी दवा घना साइड इफेक्ट्स पण अंदर होए था अने इनमें लगभग के 7 वर्ष सुधी ये प्रॉब्लम अची वी नतो के उभो न थे नहीं जो पण बिया मारू है इतला ताकतवारा कि 80 वर्ष थी अग्या पण खेंची गई ने एनी के कई वांधो न तो अच्छे चीज में એટલે इनमें फेर पे तो અને બાયુ કે જે 55-60 વર્ષ થઈ ને તો એની કે એટલો બધો શોખ નતો રહે એટલે પ્રોબ્લેમ થઈ ગયા અને માડો કે શોખ હોય બાયરી કે શોખ ન હોય તો આને કુરો કરનો ઈ વરે બે વાંધા ઉભા થતા એટલે ઈ એ વિચાર કરણ જોઈએ. I think it's a very difficult situation to be in, to be honest. Kanaki, it's a personal thing, but to be honest, from a society point of view, question भी arise થઈ શકે તો kanaki કોઈ કે અગર બીજી શાદી કરનું હોય, especially in the wife, she's not willing to have sex. These questions do arise, and in our Middle East, Arab culture है, ये लोग का normally 3-4 बाई ये लोग का जी होए. ने असांजे culture में आए country जी कायदा जी प्रमाणे you're not allowed to have more than one wife. and जे temporary marriage जो जे असांजी community में जे availability आए, it is always looked at from a negative perspective. And also people don't generally tend to practice it. So, have you come across any scenario like that, especially being used as a alternative, to try and rescue a marriage? ના હજી ઇનમે બહુ વધારે મુકે અનુભવ નહીં કુલે કે આવો ને વધારે બહુ બારે મતલબ કમ ધંધા ને ઉનમે હોસ તો કોમ में એટલો બધો મિક્સ ન થींदो હોસ કે ને પ્લસ કે એરો ન हो કે મુકે ખાનગી ગાલ્યો એરી બધી કોઈ કરે તો આવું ઇનમે મુકે બહુ આઈડિયા ના આવ્યો પણ આવું ઈ જે અહીં ગાલ કરો તો અબ્બાસભા इनमें थोड़ोक मुके हेवर जे गाल करता मुके मगज में विचार आव्यो कि ही जे आए ये कोई वडो प्रॉब्लम आए ही प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन जे आए ई जरा विचारीने करण जेरो आए અને ઈ हेवर કારણ કે પાછા જે ઘણો કવર કરણ જોઈએ તો પા हेवर ही नहीं विनो इनमें પછીથી કોક ફેરે પાછો ડિસ્કસ કરતા. Yeah, I think next session में इंशाल्लाह असां कवर करना सी in detail. So let's carry on. કારણ કે एवो खाली नंबर 7 मथी आयो. अजी बीजा असां के 33 points कवर करण चाहिए तो let's try and see if we can get through it today. અને even પા એ સમજ કે પા ના કરી સકે 40 પોઈન્ટ doesn't matter પા એને ಈ સેશન में જેટલા કરી સકે ઉડા સ્ટોપ કરી પછી પાછો કન્ટિન્યુ કરતાસી કારણ કે પૂરો ફાયદો પહોંચાડનો હોય જેટલા સુને ही इन्हीं के फायदो पहुंचे. जन के फायदो थी ने इनमें इन्हीं जी जिंदगी सुधरी हुई ने बस पांचो कम थी गयो. तो पची नंबर 8 पॉइंट आए कि बिया हुए वेता कि मारो है ई कंट्रोल फ्रीक हुए मतलब कि इनके बस जे
ઇનકે ખપે ઈ થી નો ખપે ઈ જે છે તો ઈ સચ્ચો હે બીયા બધા ખોટા બરે જે ઈ છે ઈ પ્રમાણે બધા કરે બીજી બાયરીએ કરે જે બચ્ચા કરે જે નોરોએ કરે બધા જે જુકો ઈ છે એ રીતે છે અથવા તો કોક બાઈ વેરી કંટ્રોલ ફ્રીક मतलब કે ઇનકે પણ ખપે કે ઈ જે છે ઈ છે બીયા બધા કોઈ જો સુને ના ને જે બધે કે ઇનકે ખપતો હોય ઈ થીંદો હોય અને જો બે બહેરાવે માડું એ રોવે ને બાયડી એ રીવે તો આગે ખબર પડી ને કે ઈ હે ને ઈ વિયા બહુ અગ્યા નહીં વધે કારણ કે को दी झगड़ा हुंदा ई घर में कंकास हुंदो ई घर में जन्नत ने वे जहन्नम हुंदी रोज झगड़ा ई हूं ईचे थी हूं ऊंचे तो ई नकम अचे એટલે અને ઈ આઉं પછી અગિયાવીને આઉં સમજાઈंदुसि કે કેવી રીતે ઈંજો રસ્તો હોય ઈ જે હે કંટ્રોલ ફ્રીક એ બહુ ખરાબ વસ્તુ હોય ને ઈ કિંજે લીધે એ બધો સમજાઈंदुसि ઈ પછી નંબર 9 आहे હકરો જે પાર્ટનર હોય બાયડી હોય કે માડું હોય ઈ હે ને ઈ એકચ્યુઅલી બહુ ઓનેસ્ટ ન હોય મતલબ કે ખોટાઈ હોય ને ખોટા વધારે કરે ખોટા બોલી ને ચોરી કરે અથવા તો માડું એ રોવે કે ઈમાનદાર ન હોય એટલે ઈજો કઈ ભરોસો ન થઈ શકે આખો ટાઈમ ખોટા બોલવા બોલનું ખપે કે અનપ્રેડિક્ટેબલ અહીં કોઈ એમાંથી કોઈ ભરોસો કરી જ ન શકે ભરોસો ન કરે ને આ એને સમજો કે આ કે ચા તો ખાલી મગજમાંથી કઢીને ही हकीकत है एरा मारू आइन दुनिया में एरी बाई आइन आखो टाइम खोटो बोलनो ईमानदारी की नवे ने घोटारा ई न कमाचे करे तो थोड़ो का सुधी हले પછી લંબા ટાઈમ સુધી ના હાલી શકે નંબર 10 है કે માણું કે બાયડી કે ઘાલ કરનો હોય ને તે જો રીત आहे અને આ બેના તો માણું ને બાયડી ગાલ્યું કરતા ને રારી झगड़ा करता है भाई आई आकरी स्थिति गाल भी आकरी ये गाल में की माल न हो ने आ इतनी बड़ी निंदी गाल में एरी वड्डी गाल बनाई सकिया जरा झगड़ा करी सकिया आखी आखा घर जी शांति खलास करी अथवा तो बियो रस्तो है इन जो नाम है डिस्कशन में करो है कि आके आखरी चीज जो तोड़ गिनी रचनो है इन जो डिसीजन गिनो है विचार करनो है तो आए मारू इंजा पॉइंट दे कि ना मुके लगे तो पा ही कर जाए बायरी हो इंजा पॉइंट दे मुके लगे तो के ही न कर जाए ने ही कर जाए तो ए रीते फाइन रीते ने ईगो हकरी बाजू पोते जो वट ने वो ताकत देखाड़न जो न करनो कबे जो ई करे तो आस्ते आस्ते जे पोते या घर माटे सारो है इंजो तोड़ है इंजो डिसीजन मिले झगड़ा न थे शांति रहे ने तोड़ अची सके तो हमेशा मारू ने बायरी के आर्ग्यूमेंट न करनो खपे राडा राडी ने आर्ग्यूमेंट डिस्कशन करनो खपे आराम थी तो इनमें करो शांति रहे अल्लाह जी बरकत वे अंदर ने अग्या वधे बधो अने बिया होय तो एरा कि जी अकरी बायरी जी आदत ज वे आर्ग्यू करण जी की बात में माल न वे પછી સીધો આર્ગ્યુમેન્ટ શરૂ કરી શકે અથવા મારો હોય કે ગાલ में माल न वे સીધો આર્ગ્યુમેન્ટ શરૂ કરી શકે ઈ નકમ છે એને પોતે કે કંટ્રોલ કરવાનું જો શીખવું ખપે કારણ કે એને એકલા નહીં અને વિયા કરેલા હોય ને અકરો એકલો હોય અથવા એકલી હોય એમાં ઘણો ફેર આવે બદલાઈ નો ખપે એટલે અને સરખી રીતે ડિસ્કશન કરવું ખપે અને જે ચેન્જ બદલાઈનું ખપન જે વાત છે ત્યારે it is clear કે mental health issues વધારે હોતા કોઈ either between the husband and the wife and maybe they need mental help as well that is becoming very important now within our current life કારણ કે life જે આ અસાંજી બહુ fast pace થઈ ગઈ है અને પછી ઘરે અસાં અચે ને કોઈ આડોરો કોઈ બોલી ગઈ ને એંગર થી in a different way
it can result in a very different situation. Anger jili de, argument થઈ શકે. જે ત્યાં જોનતા કે it's better to be calm all the time, which is a very good way, to kind of manage the situation. Wow, સચ્ચી ਗੱਲ કરી અબ્બાસભાઈ. આજકાલ બહુ વડા બીયા પ્રોબ્લેમ હે. મેન્ટલ ઇલનેસ, મગજની બીમારી, ને BOI ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ. એ બ ચીજ અહીં એવર ઇંજી હિન્ટ મારી આવ્યો જે બધો ડીલ કરદાસી. Next session. બ કારણ જે લીધે કેટલા બધા ઘર તૂટી પ્યા, કેટલા બધા ઘર તૂટી પ્યા. ખાલી કોઈ કે ખબર ના પડી કે કીડા પ્રોબ્લેમ હો. Okay, problem number 11. Problems in sex rank. અને હકરી ચીજ કરો હે કે પાંજા મારું ને બાયુ ઘણે કે એ સેક્સ જી ગાલ્યું में એની બહુ એની કે ધ્યાન નતો પે, એની કે કોઈ શીખાડે નતો બરાબર, તો એ લોકો કે ખબર ના આવે. અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હે કે મારું ધ્યાન રખે કે પોતે जी બાયરી કે કેવી રીતે સંતોષ દઈ શકે. અને બાયરી કે સંતોષ સેક્સ में दिन માટે इंजा पगला गिनना खपे, इंजो टाइम रखनो खपे, तो इंजी रीत आई ये बधो सीखनो खपे. जडे विया थे इंजा पहला सीखे पछी विया पछी पण विचार करे ने हकरे बेगे साथे गालियों कहीने समझे कि हकरे बेगे कुरो पसंद है, ई प्रमाणे आगर वधे. तो बायरी के जडे ई सेक्स जो संतोष मिले तो ई बाई खुश बाई होय. You see, normally is the subject, it's very difficult to start a conversation on. Ne asanji je community je hai, there's not a lot of resources that are available. From your Anji experience, Pramane, inshallah, in the next session, what we should do is maybe cover how does someone get to address this issue. From resources perspective and also from a guidance perspective as well. Kaneke normally naro ke koi vyang karan waru we pa asa school mein sikha hoye ke reproduction system etc. kete work out how the system actually works. But jete I explain kera there are certain other things as well that need to be factored in as well. And normally kurote to ke jade vyang the tade asa rely karje on the baseman, to have this private conversation with the, with the groom, or vice versa, the jadal or, the bridesmaid with the bride. Do you think, Anje Vichar Pramane, Anje experience Pramane, ke as a community, we need to invest some more time in these kind of sessions and have open discussions, that is something that we get feedback on as well. In the academia world, this is a very taboo subject and it's not openly discussed, through marital groups or through marital counseling as well, pre-marriage. And alhamdulillah, I haven't attended any sessions or I haven't heard, because there are some sessions that do take place now within our community, and whether they discuss these, I'm not really sure. But Anji experience Pramane, do you think that we should be elaborating more on these kind of topics? बहुत खास जरूरी है. जो कारण है कि जडे अगाऊ वो जडे पांजा माँ बाप जडे जीवता हुआ हिनी जी रीत बात हुई, हिनी जी वर्तणूक हुई, ये सब जुदी हुई. अजू जमानो है सोशल मीडिया जो जमानो है, पोर्नोग्राफी जो जमानो है, सेक्स टॉयज जो जमानो है, प्लस इतनी छूटछाट है कि जिनकी हद नहीं. तो ई तो पा न समझे ने कि पांजी कौम वाले कोई के ई कई गाल जी खबर नहीं, बद्दा के खबर है. ई तो वो बुझे था. अने ई जो एरो थे कि जो बाई हुए ने इनके जो संतोष न मिलदो है, इनके खबर हुए केरी जात जो संतोष पॉसिबल है मिलनो, तो इनके ई पोते या मारू वटे थी न मिलदो है तो ई खुश न वे ने. એટલે હને માણો કે પોતે ખબર ના હોય કે બારી કે કેવી રીતે સંતોષ દીનો એન્જોય વાંક નહીં. એટલે હિન માટે ઈ જે ગાલ જુગો કરો તા ઈ ગાલ સચ્ચી है, ઈ પ્રેક્ટિકલ है, ઈ અज्जा ईरा માટે ઈ બરાબર है.
ये अप्रोप्रिएट है। तो हाणे ही जे ॻाल्हि आहे ही इनमें थोड़ी मथाकुटी करनी खपंदी। अच्छा, नंबर 12 आहे लेक ऑफ गुड हाइजीन इन अ पार्टनर। हाणे वीचार करो कि बाई वे इने नीचे जो भाग બધો ચાફુડો હોય, અંદર ગંધાઈંદો હોય, તો માળું કે તો પસંદ ના અચે। સાથે સાથે માળું જો પણ એરો હોય કે બધો નીચે ગંધાઈંદો હોય, પોતે શરીર ગંધાઈંદો હોય, પોતે અંગોળતો ન હોય જરાય, કપડા ચાફુ પહેરતો હોય, તો ઈ નકમ છે। ઈ મિયામે ને બધું સાફ સુફી ને ચોખ્ખું રખવું ખપે। ખુલ્લે કે અકરબે સાથે સુમંજથી બધે કે સમજ પવીને કે ही બરાબર નહીં। તો ઈ કરણ માટે પોતે जी સ્વચ્છતા ને ચોખ્ખાઈ રખન में बहुत ध्यान रखनो खपे विया પછી। તો ही બધો પહેલેથી સમજાઈ મેળજો। પછી 13મો પોઈન્ટ आहे કે આને બચ્ચા જન્મે તો આને હું માળું જે ને ઈ નાને કે આખો ટાઈમ બસ બાયરી બચ્ચે પૂઠે જ પયાય, ઇનકે તો કોઈ દાદ નથી દે, ઇનકે જો ટાઈમ નથી દે, ઇન જો માટે ટાઈમ જરાય આય ના, તો ઈ માળું કે પોતે કે જરા ગુસ્સો અચી ને કે આને ગુસ્સો की जी कीमत ना ही करने। तो ही जरा विचार करनो खपे कि बच्चो जो आयो है ये बई जन जो है माँ है, ये माँ है। माँ की जरा इन जो छोकर बच्चे जो के धराई नो खपे, इनके जो टाइम बधो खेन जो सांचवणो खपे, इन जो पोटी ने बधी सगवड़ करनी खपे, अंगोराई नो खपे, बधो घर जो कम करनो खपे। तो ही बाई थकी ने इनके पाछे स्वावर अची वयो है, तो ही थकेली बाई वे। तो इन माटे जरा मारू के समझनो खपे कि हने पेला जेरी आराम नहीं मिले, पेला जेरो वो लव ने टाइम ने बधो जेवो हने नहीं थई सके। हने बच्चो है तो शेयर करनो खपे। तो ये मारू समझे ने उल्टे जो के साथ देनो खपे बायरी के आऊं तो के मदद करा, तो हाल तो के स्कूलो खपे तो किदा आऊं करा। तो ये बाई केटलो संतोष थे, कितनी खुशी थे कि ना हस्बैंड फीलिंग है। तो नंबर 14 ऊपर घनी बायु के जडे मेंस्ट्रुएशन अचे तो इंजा वीक पहला इन जो मूड इतलो खराब थईने इतली गारियो बोले, इतलो गुस्सो करे, इतली तोछड़ी थईने के गाल छडी दियो के हने आगे थे कि ही सालो ही केरीते पानी सन थे कि हेरीते बोले थी तोछड़ाई थी। पर ही ज बायरी ही जनरली इतली सारी बायरी वे, इतली अखलाक वाली, इतली दयाळु। पर ही टाइम अकरो अठवाडियो ई मेंस्ट्रुएशन पहला ही जो आखो मगज बदलाई वेंदो। अने चेता बिया चेता कि ई टाइम खंची लेवल लोही में ओછી થઈ વેને थी। अने आई माण्हू के समझ पई वेने कि जॾहिं पाण रोजो रखंदा तो तॾहिं खंड जो लेवल ओछो थिए। ओछो थिए मगज कम न करे तो एटलो गुस्सो अची वञे ताकि थोड़ोक आइडिया अचे कि ही बायरी खे क्रो थींदो हूंदो। तो हिनी जे गुस्सो करे त आखे वीचार थिए कि हे रीते करे, पर हाणे हिनी जाणी करे नथी करे। ही हॉर्मोन्स जे आहे ने शरीर में इंजा લીધે ही प्रॉब्लम अचे थो। तो घणे वखत इंजा લીધे બહુ વડા ઝઘડા થઈ વञे था, વડા प्रॉब्लम થઈ वञे कि પછી तलाक जी ॻाल्हि अची वञे। पर વાત में की माल नथी वे, पर केरु सम्झाइण वारो केरु आहे? केरु सम्झाए कि भाई असां जो सुनजे आखे हिकिड़ो तकलीफ़ आहे ऐं चओ પછી इंजो की रस्तो कोई ही कोई तर हिनी चए न कारण के किथे पंहिंजी ॻाल्हियूं कुले ॿिए खे चोजे। अने ही જરાક વિચાર करण जहिड़ो आहे। ॿियो हिकु जॾहिं प्रेगनेंसी वे हमल वे ॿाहिरि खे तो इंजा हॉर्मोन्स वधी वञे तो इंजो मगज ठिकाणे न वे कारण के हॉर्मोन्स वधारे वे तो ही જરાક इम्पेशंट थी वञे ने इनके नींदी વાત में જરાક खराब लगी वञे, मूड ऑफ थी वञे। अने ही हॉर्मोन जा લીધે ही बाई जाणी કરીને नथी करे, यानी ही कुदरती है। It's a different chemistry, kind of, you know, the way men have been created and women have been created. Science they prove kairi gini hai ke, you know, they're made of different chemistries, you know. Now आजकल problem भी थेनो है कि मारू ऐसा होता, look, we think that, you know, the lady is thinking the same as well.
not realizing that if she's going through this phase, it is a difficult phase for her from a mental perspective, and simultaneously असांखे बि वीचार કરીને સિચ્યુએશન હેન્ડલ કરવું ખપે, કારણ કે સિચ્યુએશન ઘણો બી થઈ તો કે કોઈ ખારો થઈ વિને જલ્દી ને પછી મેં ઝઘડા બી વધી વિના है. So important કે as part of your day-to-day life as well, that you have to factor this in as well, and it's a good point Dr. Lakha ji I highlight કરી રહ્યા મેં. આની કાલ સચ્ચી બાજુભાઈ કે ઈ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નહીં જાણનું. ભલે પાંજા ન્યૂઝપેપર્સ ને મીડિયા ચેતા કે બાયડી ને માળું ઇક્વલ આય, પણ આવું તો માળું ને બાયડી ઇક્વલ નાય. માળું જુદાય, બાયડી જુદી. બાયડી जी રીત સાવ જુદી વેતી, માળું जी રીત જુદી વેતી. માળું બાયડી દેખાવ में જુદી વેતી, માળું દેખાવ में जुदा. બાયડી जी બોડી અંદર જે રીતે કમ કરે તી ને માળું जी બોડી અંદર સાવ જુદી है. બરાબર, emotions are very different, emotions પણ સાવ જુદા है. ઈ સમજો આય ઈ જો જે મીડિયા જે છે તો ઈ સચ્ચો નહીં, ઇક્વલ નહીં. બાયડી जी કિંમત ઇજ્જત માળું કરતા વધારે આય. બાયડી जी જે ઇસ્લામ में જે કિંમત है जॾहिं वाचो तॾहिं ख़बर पए कि કેટલી કિંમત है. બહુ જ ખાસ વધારે કિંમત બચ્ચે વટે. ઈ માં જે વેતી સૌથી વધારે દુનિયા में જે મોહબ્બત ને પ્યાર है, જે સચ્ચો પ્યાર ને મોહબ્બત आई मां ने बच्चे जो है. आई समझिए ઈ એરો નહીં, ઈ નહીં છે કે બાપ ને બચ્ચે जो, मां ने बच्चे इनमें કંઈક આય, इनमें कुदरती की गए. એટલે ઈ હંમેશા યાદ રખવું કે માળું ને બાયડી જુદી જુદી યાદ જાય. અલ્લાહ બનાય, ઈ અલ્લાહ જો ડિઝાઇન है. અને જડે બાયડી કે મેનોપોઝ છે અને જડે ઇંજા હોર્મોન સાવ ઓછા થઈ વિલે તો ઇનકે બેચેની थे, મુંજારો थे, ઇંજે નારે કે હનેડા મોર में थे, रिंकल्स થતા, વાળ ધોળા થતા, ઇનકે મજા ના છે. ખાસ કરીને એરી બાયરી કે ઇનકે પોતે બહુ બ્યુટીફુલ કંદી હોય, ઇનકે તો બહુ દુઃખ થઈ વિને. તો એરા ઘણા પ્રોબ્લેમ છે હોર્મોન જે લીધે મુંજારો, નિંદર ના છે, બેચેની વે. તો ઈ ઇનકે નીચે ઇનકે બધો સુકાઈ વિને તો ઇનકે જડે માળું સાથે વે તો એટલી મજા ના છે પેલા જેટલી. તો ઈ બધા પ્રોબ્લેમ્સ જડે મેનોપોઝ છે તો ઈ છે. અને ઇનमें वरी बीजा प्रॉब्लम्स થઈ વિને કે ઇનકે આને સેક્સ में જરા ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, કોઈ સાથે ભીડનનું ન ગમે, તો વરી બીજા નવી જાત પ્રોબ્લેમ થઈ વિને. તો ઇનमें ध्यान रखनो खपे કે एक्चुअली ही जो प्रॉब्लम है मेनोपॉज जो કે प्रीमेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम जो કે प्रेग्नेंसी जो, तो माण्हू खे જરાક સમજનું ખપે કે ઈ બાઈ જાણી કરે નથી કરે, ઈ એને કુદરતી आहे. ઈ અલ્લાહ બનાય રીતે. અને ઈ જદી વિચાર કરતો કે ઈ પા વ્યા કર્યાસી ઈ અલ્લાહ जी રીત પ્રમાણે आहे, એની જે ચોન પ્રમાણે, તો તદે એની કે મગજ में હદો કે હિદાય ને ખોટી રીતે મગજ ગરમ કરવું ને ટોચરાય કરવું એ ફાયદો નહીં. અને અબ્બાસભાઈ અકરો કલાક થઈ ગયો પાંગે, સ્ટોપ કરજે, કન્ટિન્યુ કરજે, કારણ કે ઈ આઈધર આપા રશ કરીને બોલો ફાસ્ટ में કરજે, અથવા તો ઈ સ્લોલી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વિંજે જે પા વિનોતા જે રીતે. તો જો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વિંદાસી તો બધા જે સંતોષ થીંદો, બધા કે આઈડિયા દો, એની જે મગજ में સવાલ ભેગા થીંदा, પછી 11 સેશન में એની સવાલે ગિન્યતા તો પા જે જવાબ દઈ શકતા. બરાબર है. So એવર જે પા અજે પા ગિન્યાસી ફોર્મેટ સિસ્ટમ ઈ જ રખદાસી પા तो बदे के फायदो વધારે થીंदो. બરાબર. તો ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ સેશન में असां कंटिन्यू करना सी द सेम टॉक. from 15 number 15 नंबर 15 खाने के मूंखे थियो कि असां जल्दी 40 points कवर करी गिनासीं अॼु, पर alhamdulillah the discussion has gone into a lot of detail, and let's continue this same discussion ji in the next session. ने इंशाल्लाह गने मारू के ने बायरी के फायदो थीनो, and inshallah
बची जो session असां focus करनासी solutions and how help can be become available, etc. Yeah, I thank you for your time. बहुत शुक्रगुजार हैं Dr. Amir Lakha कि आई time dedicate करा, and inshallah in the next session we shall cover that in a little bit more detail. So for the viewers, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.